A warm welcome to all of you to our special program on the occasion of National Science Day. To introduce Gurushala, it is an initiative of Vodafone Idea Foundation and Indus Towers Limited, and the program is implemented by Pratham Education Foundation. आइए हम सब आज के कार्यक्रम की शुरुआत सर सीवी रमन को याद करके करते हैं. National Science Day is celebrated in India on 28th February to commemorate the discovery of the Raman effect by Indian physicist Sir C.V. Raman in 1928. This day aims to promote scientific temper and inspire curiosity in the field of science amongst the youth. The day also honors the contributions of scientists and encourages scientific innovation and research. It is this spirit that we seek to celebrate here today. Let us start by watching a video of a program that aims to instill scientific values in our students. Gurushala, a teacher capacity development program, has been working for more than 10 years across the country on enhancing teaching learning capabilities. At Gurushala, we firmly believe in an activity-based learning approach, fostering critical thinking and experiential learning. Last year, Gurushala started a science program that served as the first step in realizing this vision, resonating with the principles outlined in NEP 2020. Let's see how far we've come in this journey. Hello, my name is Tenzin Lamu. This is Dr. M. Veena Mani. My name is G. Anil Kumar, Social and Physical Science. Hi, I am Anusha Kamath from Indradi English Medium Higher Primary School. My name is Neetu Rijiju. The experience was good. This was helpful for me to build up my content knowledge. We had discussed various science activities. I have like to ask constructing a C-60 bomb. Okay, with the pentagons and hexagons. We have constructed the C-60 and we have decorated it, and that was a very enthusiastic and. I liked that activity which was asked us to write anything on the self-sticking pad and then we had to stick it there. Metal detector using ice cream stick, battery cell, buzzer and some wires. So when we touch this with a metal, ये बताता है कि ये metal है और ये नहीं बज रहा है, इसका मतलब this is a non-metal. Just complete two squares. See, teachers. Yes, Vijayalakshmi madam. What is the difference in between these two? The grass leaf, the mediation, the parallel leaf. What is the ये जो है ये स्थिर अवस्था देखिए स्थिर है तो ये तरल के जैसे व्यवहार कर रहा है जब इस पे जो है प्रहार कर रहे हैं या दबाव डाल रहे हैं तो ठोस के जैसे यह व्यवहार कर रहा है परफेक्ट एकदम परफेक्ट है बेटा बहुत बहुत बधाई देते हैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं इसी प्रकार से ये कार्यशालाएं आगे और अद्भुत रूप से आयोजित की जा सके थैंक यू So thanks to Gurushala and much thanks to Pratham Foundation for organizing this training. Right. So, as we continue our commitment to improve the teaching learning processes of our country, this was a video celebrating the journey so far. आइए अब हम आज के कार्यक्रम के एक विशेष सत्र की ओर बढ़ते हैं.
Let us invite the students of Varanasi, Uttar Pradesh, Vidhi and Shivani, to share their creativities with us. I welcome Vidhi and Shivani. A very warm welcome to Anuradha ma'am as well, who has been guiding these students. And we look forward to knowing about the creativities that your students have to present today. I would request Anuradha ma'am to unmute and share so that we can all hear you. Yes. मेरा नाम शिवानी यादव है। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पूर्व माध्यमिक विद्यालय भिखारीपुर रातला वाराणसी है। मैं एक मॉडल दिखाने जा रही हूँ। देखिए, हम लोग एक कार्डबोर्ड लिए हैं और उस पे चुंबक रखेंगे। फिर ये लोहे का चूर्ण है, इस पे डालेंगे। डालने के बाद देखिए क्या होता है। फिर इसे हिलाएंगे। चुंबक के किनारे चुंबक के दोनों किनारे चुंबकीय गुण ज्यादा होता है, इसलिए चुंबक किनारे ज्यादा चिपका हुआ है और बीच में कम होता है चुंबकीय गुण, इसलिए बीच में लोहे का चूर्ण कम चिपका हुआ है। और ये जो रेखाएं दिखाई दे रही है, ये चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। थैंक यू मैम। Thank you so much. Yes. मेरा नाम निधि प्रजापति है। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम पूर्व माध्यमिक विद्यालय राजतला वाराणसी है। आज मैं एक जादू दिखाने जा रही हूँ। ये एक जल से भरा बीकर है और ये एक पेंसिल है। ये पेंसिल अभी सीधी है, इसे अब मैं इसमें डालूंगी। देखिए, ये पेंसिल हमें टेढ़ी दिखाई दे रही है। ये पेंसिल हमें टेढ़ी दिखाई दे रही है। ये पेंसिल हमें टेढ़ी इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वस्तु का प्रतिबिंब टेढ़ा दिखाई देता है, इसीलिए ये पेंसिल हमें टेढ़ी दिखाई दे रही है। और मैं आप लोगों को एक चीज और दिखाने जा रही हूँ। ये कोनिकल फ्लैक्स है जो उत्तल लेंस की तरह काम करता है और ये एक एरो बना है, इसे देखिए। ये पास में है तो ये एरो सीधा दिखाई दे रहा है। और शीशे से दूर किए तो इसका प्रतिबिंब उल्टा दिखाई दे रहा है। ये उल्टा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि जब हम उत्तल लेंस की फोकस दूरी पे किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमें सीधा दिखाई देता है और जैसे ही हम फोकस दूरी से हटाते हैं हमें वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच विधि एंड शिवानी इस अद्भुत प्रदर्शन को हमारे साथ साझा करने के लिए। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी मैंगलोर से हमारे साथ जुड़े हुए कुछ स्टूडेंट्स को, संजू एंड किरण, टू शो देयर प्रोजेक्ट्स। राजेश्वरी मैम हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी राजेश्वरी मैम से कि अपने स्टूडेंट्स का जो प्रदर्शन है वो हमारे साथ शेयर करें। राजेश्वरी मैम, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? ओके, सो हम थोड़ा इंतजार कर लेंगे राजेश्वरी मैम और उनके स्टूडेंट्स के प्रदर्शन के लिए। उससे हम आगे बढ़ेंगे और वाराणसी की ओर चलेंगे जहां हमारे साथ रोली और अनुज जुड़े हुए हैं अपने प्रदर्शन को हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी रोली और अनुज को और उनके साथ डॉक्टर श्रवण कुमार गुप्ता सर जो हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत वेलकम आपका हमारे इस इवेंट में।
क्या आप हमें सुन पा रहे हैं सर? मेरा नाम Okay. रोली, मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम कंपोजिट स्कूल नंदना मैं आपको प्रकाशन हरे हरे पौधे हमारे चारों ओर कुछ ऐसे जीव हैं, कुछ सजीव कुछ निर्जीव, जैसे जैसे सजीवों में मछली, खरगोश, कीड़ा, बकरी आदि सजीव हैं और पत्थर, चट्टान, जल आदि निर्जीव हैं। जैसे मनुष्य में कुछ विशेष चीज पाई जाती है, जैसे कि पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे अपना भोजन बनाने के लिए जल और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। पेड़ पौधे कच्चे पदार्थ, वायु तथा मृदा एकत्रित करते हैं और प्रत्येक जीव की तरह ये भी अपने का प्रयोग करते हैं और वह कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। थैंक यू। मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। आज मैं विज्ञान शिक्षक डॉक्टर श्रवण कुमार गुप्ता से मैं आदित्य एल1 का मॉडल बना पाया हूँ। आदित्य एल1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन आदित्य एल1 है। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में है। जो सूर्य पे जितना भी जानकारियां प्राप्त करेगा वो हमें पृथ्वी पे पहुंचाएगा। आदित्य एल1 को 2 सितंबर 2023 की सुबह 11:50 पे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। ये PSLV XM C57 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आदित्य एल1 में एल का मतलब है लैग्रेंज बिंदु वह कहलाते हैं जो सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक सरल रेखा खींचने पर जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है वह लैग्रेंज बिंदु कहलाता है। सूर्य के प्रधान वैज्ञानिक है डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम। सूर्ययान को बनाने में कुल लागत खर्च हुए लगभग 400 रुपए करोड़। इसका वजन है 1480.7 kg। इसमें 7 प्रमुख पेलोड हैं। आदित्य एल1 का उद्देश्य यह है कि सौर ऊपरी वायुमंडलीय अध्ययन करना और सौर प्रभा मंडल के अध्ययन करना। आदित्य एल1 ये है, इसको उड़ा के हम आपको दिखाते हैं। देखिए वो भी है, इसको हम नीचे कर देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोली एंड अनुज हमारे साथ इस प्रदर्शन को शेयर करने के लिए। हम आशा करते हैं कि आप विज्ञान की इस जिज्ञासा को बरकरार रखेंगे और अपने भाई बंधु और अन्य साथियों के साथ मिल करके उनको भी प्रेरित करते रहेंगे। नाउ लेट्स इनवाइट द स्टूडेंट्स ऑफ दक्षिण कन्नड़ा कर्नाटका संजू एंड किरण टू शेयर देयर क्रिएटिविटीज विद अस। तो मैं यहाँ संजू और किरण को बुलाना चाहूंगी, जिनके साथ हमारे स्फूर्ति मैम भी जुड़ी हैं। स्फूर्ति मैम जिन्होंने श्रवण और किरण को, संजू और किरण को गाइड किया है। स्फूर्ति मैम। Excuse me, ma'am. There is a small mistake. It's Anjali and Tarana, which I have guided. Whom I have guided. Okay, sure. So yes, your students Anjali and Tarana will be sharing their creativities with us. Okay, we can share it. Can we now? Yes, please. Yes, ma'am. Over to the students. Yes. Good afternoon, ma'am.
Good afternoon. Good afternoon, everybody. ನನ್ನ ಹೆಸರು ತರನ. ನಾನು 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸತ್ತಿದ್ಲು. ನಾನು ಇಂದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯೋಗದ ಹೆಸರು ಬಲೂನ್ ಕಾರ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಎಂದರೆ ಬಲೂನ್, ಸ್ಟ್ರೋ, ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್, ಹಳೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯ ಮುಚ್ಚಳಗಳು. Shall I start? Are you ready? ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು? ಬಲೂನ್ ಊದಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಗಾಳಿಯು ಪ್ರಚನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗಾಳಿಯು ಸ್ಟ್ರೋನ ಮೂಲಕ ಹೊರಚಲಿಸುವಾಗ ಚಲನಾ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರು ಮುಂದೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚನ್ನ ಶಕ್ತಿಯು ಸಂಗ್ರಹವಾದರೆ ಕಾರು ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಬಹುದು. ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂಜಲಿ. ನಾನು 5ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಇಂದು ನಾನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯೋಗದ ಹೆಸರು ನಾಣ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ. ಒಂದು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಬಣ್ಣದ ನೀರನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಿಮಗೊಂದು ಸವಾಲು. ನೀರನ್ನು ಮುಟ್ಟದೆ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವಿರಾ? ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಈಗ ಕಾಯಿನ್ ತೆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ಹಿಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು? ಗಾಜಿನ ಲೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪೇಪರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉರಿಯಲು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಗಾಜಿನ ಲೋಟದಲ್ಲಿಯ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಗಾಜಿನ ಲೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಸಿಯಾದ ಗಾಳಿಯು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ನೀರನ್ನು ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಕ್ಷನ್ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಹೊರಗಿನ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡವು ಗಾಜಿನ ಲೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಾಜಿನ ಲೋಟದಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ವಾತ ಪ್ರದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಲೋಟದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Yes, ma'am. That's about the experiment. Right. Thank you so much. Thank you for sharing that amazing experiment with us. Would you like to summarize the experiment with all of us so that, yes. Yeah, sure. So, as you have seen that,
Our students have performed 2 experiments. The first experiment was with the balloon car. Okay, so it's a car which is powered by balloon. Normally, we know that vehicles travel when they are powered with the fuel. So, is it visible? This picture? Yes, this is the what Yes, it is. exactly we see it in day-to-day life. We have experienced. So the fuel is powering here to the car to move ahead. But what we have done in our model is we have used the balloon in the place of fuel. The balloon, whatever the air present over inside the balloon, it acts as a potential energy. The air pressure, in the form of air pressure, it acts as a potential energy. When you inflate the balloon, potential energy in the form of air pressure is stored inside it. Then what happens is when she leaves it, the air which is coming out of the straw, which pushes the car to move forward. Because of what happens there, the potential energy gets converted into kinetic energy. Because of that, the motion occurs. So in this experiment, we are going to show air has got some energy. Because of that energy, it made the car to move ahead. If more amount of potential energy is stored, that means if you inflate the balloon much larger, then the car will move to a longer distance. And we can also see the formation, the interconversion of energies from potential to kinetic energy can be seen in this experiment. Since the girl was from 6th standard, Newton's laws are not aware of, means they're not aware of Newton's laws. Even the Newton's third law of motion plays a role in this experiment. So I think the first experiment is clear. Am I clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You're perfectly audible and clear, and we understand. Yes. Okay. Oh, shall I move to the second one then? Yes, yes, please. Yeah. Okay. The second experiment, it was a kind of magic trick. So you can see that just she has taken a plate, a piece of coin. Okay, a coin was taken, and she dropped the coin into the plate, and she poured some water into it. It was colored water just to show the difference when the water level rises up when she inverted the cup there. So just to show the difference, we have used a food color, green color. So it was a green colored water, nothing else again. No chemical, nothing. Okay. So she has, what she has done is, as you have seen clearly, she has put it, and she has put a nimagondu savalu, she said. You might have listened to it. Yeah. So it's a challenge. It's a challenge. Sawal hai aapke liye. Okay. So it's a challenge. What is your challenge is you have to take the coin out of the water without touching the water. Without touching it. Okay. Since the coin was immersed inside the water, it is very hard to take out the coin out of water without touching the water. Okay. So what had happened there is we should use some scientific principle, that is suctional force. So what she has done, she has taken a glass, as you have clearly seen, and she has taken a piece of paper, newspaper, and she put a fire into it. Paper starts burning, and immediately after some time of interval, she inverted the cup into the plate. What happened there? What was the scientific principle working? Initially, there was oxygen inside the glass. So with the help of oxygen, the paper started to burn. When she inverted the cup into the water there, into the plate, then due to the shortage of oxygen, the fire went off. At that time, the hot air, which is that carbon dioxide, which was present over there, it started cooling down. At the same time, when the air starts cooling down, it started contracting. The time of contraction shows the lower pressure region inside the glass. And this time, the water outside the area was sucked into it. That she said suctional force. Okay, it was sucked inside. So usually in science, whatever the fluid it is, air, liquid, anything, they move from higher region of concentration or higher region of pressure to the lower region of pressure. Yes. So this is a simple concept we can share with them for the 5th and 6th class of level. Suctional force is not that level, not their level, because then comes the vacuum, and if you go for the higher advanced level of physics, there comes the vacuum. So I can't teach them the vacuum, but still, just you can say that higher pressure to lower pressure, the air moves. You can show with that simple experiment. So that was the second experiment. I hope it is.
Yes, yes. Thank you so much, Purti ma'am, for summarizing the two experiments. It is Thank you so much. amazing to see such enthusiastic participation from your side, as well as how you have guided the students, and you're still continuing to do so. Yes. So thank you so much, Purti ma'am. Now, I would like to request Rajeshwari ma'am to share uh, the students to encourage her students to share the experiments that they have created. Rajeshwari ma'am, over to you. Namaste, ma'am. Yes. Namaste, Namaste. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Namaste. Thank Very you, warm Gurushala. welcome to you and your students. Thank you, ma'am. Thank you, Gurushala, for providing us an opportunity to participate in today's program, that is Science Day, National Science Day. First of all, I wish everyone a happy National Science Day, because this is the day wherein innovation has taken place a long back, and every day we must think for new things. And today I have come with two students. There is Kiran, another student, Sanju is there. These two students are performing two experiments in front of you. Now it is over to Kiran to present his model. Thank you. Good morning, everyone. My name is Kiran. First, I wish you all the happy Science Day. I'm studying in 8th standard, UK's at the upgraded higher primary school, Gandhinagar, Mangalore North, in the Kannada district and Karnataka state. Today we have learning the two types of circuits. We have series circuit and a parallel circuit. Series circuit and a parallel circuit. First, we discuss about a series circuit. You can see the diagram of series circuit. I have taken a 3 torch bulbs, switch and a 9 voltage battery. You can see the all bulbs are connected end to end. When I on the switch, the all bulbs will glowing. When I remove one bulb, the others will be not glowing because the all bulbs are connected end to end. When I remove one bulb, there is an open circuit. This is the main disadvantage of series circuit. When I again fix it, the all bulbs will glow. You can see the all bulbs will glow. This appliances used for this series circuit used for decoration lights, functions, Christmas lights, like that. Next we are going to the parallel circuit. You can see the parallel circuit diagram. We have taken the 3 LED bulbs and a 9 voltage battery and a switch. When on the switch, you can see the all bulbs are glowing. The all bulbs are connected to the main source. When I removed one bulb connection, the other two will be glowing. But in the parallels in the series, when I when I removed one bulb, the other will be not glowing because there's an open circuit. Here here in the series in the parallel circuit, the all connected to the main source. That by when I remove one bulb, the other two will be glowing. This circuit used for home electric appliances like fans, fridge, all that. Thank you. Good morning, everyone. Good morning, everyone. My name is Sanjoy. I'm studying the 7th class. My school name is DK Dakti Higher Primary School, Gandhinagar, State Karnataka, the district Dakshina Kannada. Now I will show you the model of a reflection light and a refraction light. Now I take a one plastic container. I fixed the one mirror and I pasted one OHP sheet with protractor and another side made small hole. Now we will close a plastic container. Now I flame our incense stick. Now I will keep it inside the
plastic container and a box filled with smoke. Now I make the raise the light with laser light plane with plane mirror. This is the incident ray and this is the reflected ray. The incident ray, the reflected ray, and the normal are on the same plane. Same plane. And this is the incident ray, and this is the reflected ray. Normal to our same plane, and this is the first law. And now I made the laser raise the light with at 60 degree. At 60 degree. The reflected light is going back to find the 60 degree, and I change the 50 degree, and I fall the 60 degree and reflected back to the 60 degree, and this is angle of incidence is equal to the angle of the reflection. I is equal to R. This is the second law. Now we will go to the refraction of the light. Refraction of the light. Explain what is that. The phenomenon of bending of light as the surface separating the two media is commonly known as reflection of light. This is the air medium and this is the water medium. Here to air medium and this is the water medium. And I take a laser light when the light travel along a straight line, traveling a straight line when light is traveling another medium to light's bending. Bends at light, the separating the two medium is called to refraction of the light. Refraction of the light. Now I also keep the refraction of the light from prism. I make fall of the prism, and this is the incident ray and this is the emergent ray. The incident ray at the straight and the emergent ray of the bend, you can see the emergent ray. And I turn the prism and I make a raise the light for prism. You can see the other surface. Here I take a one pencil and scale. When I keep in the water, the pencil look like a one largest and bend. Now I take another scale. I keep in the water to the scale look like a largest and bend. This shows reflection of the light. Reflection of the light. Thanks everyone. Thank you. For giving us an opportunity to present our students on this day. This really helps the students to think in a manner how creativity can be built. All the projects that are prepared by students, I only give the guidance. Thank you for providing the opportunity. Thank you so much, Rajeshwari ma'am, and thank you to Sanju and Kiran as well for showcasing and demonstrating these experiments. It is really amazing to see such rigor, such jigyasa jo hai, such curiosity in the students' minds, and we hope that this continues. Now, I would like to request the teachers that have joined us today to come and share their experiences with us. The experiences that they had with the program, that the science program that we have started. So I request Spurti ma'am. Let me first introduce all the teachers here. Spurti ma'am, who has joined us here today from Karnataka. Rajeshwari ma'am from Karnataka as well. Anuradha ma'am and Shravan sir, they have also joined us today from Uttar Pradesh. I request all the teachers to one by one come up and share their experiences with us here. So, yes. And then we also have a very special guest with us today, Deepa ma'am. First, I request, yes, Spurti ma'am,
please share your experience with us. Okay. Thank you, Lavina ma'am. Most delightful afternoon wishes to all the science facilitators over there and the young curious minds. First of all, happy National Science Day to everyone gathered there. First and foremost, I would like to take this opportunity to extend my heartfelt gratitude to the team Gurushala for providing such a sublime opportunity and having our school selected for this ingenious and productive session. Thank you once again. Science, to speak with my experience. See, I am a new teacher. First, let me introduce. I have joined here, it's been since 3 months, just 3 months. Okay. So I need to explore this school still more. So to share my experience, there is a very few thing to share with. Only the one training I have attended, science training, that too on 16th and 17th of Jan, the last month. So what I feel is, instead of sharing the experiences, being a science teacher, what makes a good science teacher? I would like to share my opinion on a good science teacher, being a good science teacher, and how can be science taught effectively to the students. So that's what I think I could share at the right now. So we know science is all around us. Science is not just a rocket science. Okay, it is from the moment the sun rises until the stars and moons appear. Everywhere there is science. It's a systematic and logical approach to things, how they work in the universe. It explains us very well. The moment you wake up and open up your eyes, science is already at its work. Leave it. Let's take one more example. That is for the transportation system. We depend upon bus, many vehicles, right? So the transportation that we use to come to school, college, anywhere, office, even that wouldn't have been possible without science. We take food, the outcome of the food we eat, even that can be explained with the help of science. Tell me where there is not science. Okay, let me come to most debated one, emotions. We see it is not a technical one, it is not the science related subject. Yes, I agree, but still the emotions, whether we are happy, whether we are sad, even the emotions are controlled by hormones, we know that. Even there is science behind it. So observing all these scenarios, what we feel is science is attached with us. Science is involved in our everyday life. But the thing is that, being teachers, are we teaching science correctly? There is something missing in our teaching. See, we might be expert at our own zones. Okay, we might be having master's degrees, everything. Yes, we try harder. But what student needs, what the system demands, that we need to understand, I feel. So, being a science teacher, science can be used in both the ways. It is a boon as well as bane. We know the well-known example is of nuclear fission. It's a simple concept in science. If you control the nuclear fission, you are going to get the electricity out of it. If it is uncontrolled nuclear fission, what we are going to produce? We are going to produce a nuclear bomb. It's a bane. So, science gives us everything, but it is within us how to use it fruitfully, how to use it for the betterment of society. The main goal of science is the same. It should not destroy the society, it should save the society. I personally feel that being science teacher, it is our prime duty to educate a child, to educate the youth, to channelize them in a proper direction of science. So educate them in such a way that where they can use it fruitfully. So science obviously has a wide range of knowledge. It's a vast subject. Okay. If you teach them just the subject, just the concept to them and got the kid to memorize it, you are not producing nothing more than the human data storage systems, according to me. What they will do, they can't do science if you teach like that. What they can do, just they can regurgitate the facts or the concepts what they have learned, produced by it. So therefore, see, I would like to quote one example for this. You have a chisel with you, okay? And at the same time, you know the rules of usage of chisels also. You know how to use it also.
But knowing the rules to use a chisel wouldn't make you a great sculptor, right? So same thing, same theory can be applied to the science also. That means there is something else needed to make it a great art for a sculptor. Just as science needs something more to make it a great science. In both the cases, it's the same. What is that? Practical exposure or the practical application of science. And practice and creativity apply to both the cases. Chisel, sculptor, science, everywhere. So hence, I feel science, my point of saying is what I would like to say, science must be taught in a practical way. Practical approach should be encouraged. So our goal, it should not be, see, what the student need to know, you should not focus on that. Just you should know them, what is around them, whether he knows about it, whether science is working inside his home, inside him, within the system, whether the science works. Students are not aware of it. Digestive system, yes, it's in the textbook. It's not within us. They couldn't relate or they couldn't connect their real to the subject to the real world experience. This is lagging because we are focusing on subject concepts, not on the practical applications. And our system demands the same. So that has to be changed, I feel, according to me. If we change that, definitely we will be an effective science teacher. What you can do in that case, one is the practical exposure. I said you can easily connect with the experiments. Then, while teaching the theoretical concepts, don't go by the textbook definitions. We should not go by the textbook definitions. What we can do, the students are very curious to hear the stories. Just a simple example, whether it be sodium and chlorine, the ionic relationship between them. Just humanize the subject, humanize the science, give some characters to sodium and chlorine. Then they will enjoy the subject. Then one more thing, you know the fluorine. It's an highly electronegative element. You just start the concept by saying that fluorine, even though it is the most electronegative element, but everyone likes the fluorine most. Why she is being liked most? By all of the members on the table. I mean to say periodic table. Just you can say, dramatize the situation, even bring that drama into science. Then they will enjoy. Students will start enjoying the science. Try to deliver the scientific concept. We need to try to deliver the scientific concepts in a fun and interesting way. We should say that science is not just a subject. It's a powerful tool which is required in our day-to-day life. And it emphasizes on the learning by doing principle and hands-on activities. For this reason, we need a good laboratories. And the laboratory is just one such place, I feel, which can keep the effort for discovery and innovation burning. This is my personal experience. Definitely. We should allow the kid to touch it. Okay. So on that note, I would like to conclude. So my point of saying is what we need to encourage the practical exposure. And on the special mention, I would like to mention the Gurushala team for providing the science kit. It was a wonderful asset to our laboratory, ma'am. So thank you very much. On behalf of my school students, everyone, I'm grateful that for your generous contribution to the school. So I would like to conclude now because other teachers are waiting. Okay, concluding on a note that this auspicious day of National Science Day, let us all embrace the spirit of inquiry and discovery and work together to create a bright and scientifically enlightened future for all of us. Wishing you a very happy National Science Day once again. Thank you for the opportunity. Thank you so much, Spurti ma'am, for those kind, amazing words. And thank you so much for sharing such beautiful insights of what you feel science is and what you feel science should be taught and how it should be known around us, right? Thank you so much. Now I request Rajeshwari ma'am to share her insights and her experience about the program and science in general. Over to you. Good afternoon, everyone. First of all, today it's, as it is told, it is a National Science Day. And in this auspicious day, we have got, especially many schools have been trained in Gurushala training camp
but very few have got an opportunity today to present. So I'm thankful for choosing our school children, and for this opportunity, I'm again grateful to Gurushala team. One thing we can see that science is nothing but learning by doing. It is not just mug up the things, it is a practical experience, because whatever we see around, science is based on 3 questions: what, why, and how. Once students find the answers to this, they explore the things. So let us, as science teachers, our work is to just make them to ask questions. If they ask questions, they may not get the answer on the same day, but one or the other day, the answer they'll definitely get, because if they don't question, there is no opportunity for getting the answers, because they believe whatever we tell, they will believe. But that should not happen. They should find it in their day-to-day life. For example, if you say that the white light is made of 7 colors, so when I show this Newton rings, students, when I just turn this one fastly, so they can see the white light. Simple way of showing that white light is made of 7 colors. So this type of simple experiments can be done to inculcate interest in science. So you may not have much fund in you. Low cost or no cost materials can be used to teach science. So many times we as government school teachers, we say that we don't have materials, we don't have such things so to teach science, but we just have to see around us whatever is available, that has to be used, so that students just think, and students just look around them and find something new, because all the innovations starts with asking questions. So let us promote the students, let us encourage the students to ask the questions and be supportive in finding the answers. Thank you once again for providing the opportunity. Thank you, everyone. Thank you so much, Rajeshwari ma'am, for those kind words, and thank you so much for being here today with us. Thank you. Next, I request Anuradha ma'am to share your experiences with us, please. गुड आफ्टरनून मैम। गुरुशाला ने हमें जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है उसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू गुरुशाला टीम को। और बच्चे ये करके आज बहुत खुश हैं। हम लोगों ने जब भी ऑफलाइन बीआरसी पर जब भी ट्रेनिंग ली थी, या जो आप लोगों का ऑनलाइन सेशन चलता है, और अभी जो ये हो रहा है, ये एक नया एक्सपीरियंस है बच्चों के लिए, हम लोगों के लिए भी। साइंस की टीचिंग के दौरान हम लोगों को मतलब बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, अक्सर ही मिलती रहती हैं, लेकिन ये जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है और प्लस जो हमारी नॉलेज है उसमें तो हमें बहुत सारी चीजें पता होती हैं, लेकिन जो नहीं पता है वो गुरुशाला हमें दे रही है। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है हमारे लिए। और किस तरह से बच्चों को बताया जाए, कैसे बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए, ये भी गुरुशाला टीम ने जो हमें सिखाया है, ये बहुत अच्छी चीज मुझे लगती है। इसके अलावा जो साइंस है, जैसे कि मैम ने पहले ही बताया कि उससे हम लोग मगअप नहीं करवा सकते, बच्चों को रटवा नहीं सकते, बिल्कुल ही उससे दूर है। तो एक्सपीरियंस बच्चों का ऐसा होना चाहिए कि बच्चे खुद करके उसे सीखें। बच्चों को खेलने के लिए चीजों को दे देना चाहिए। साइंस हर जगह है, डेली लाइफ में, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारे चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है उन सब के पीछे साइंस है। तो बच्चों के आगे ना क्वेश्चन, उनके हम लोग के पास बच्चों के भी क्वेश्चंस आते हैं कि मैम ये ऐसा क्यों होता है, मैम ये ऐसा क्यों होता है। उनके जो क्यों और कैसे का जो सवाल है ना, यही साइंस है। ये अगर हम लोग उन्हें एक्सप्लेन कर पाए तो उनका साइंस के में जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता है और क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होती है। तो हमें उन्हें कभी रोकना नहीं चाहिए। उनकी जो क्यूरियोसिटी है उसे हमेशा जो है उसका जवाब देने का प्रयास करना चाहिए और बच्चों को खेलने देना चाहिए। चीजों को आप उनको प्रैक्टिकली बताने से अच्छा है कि उनको सामान दे दीजिए, पहले वो खेल ले उसे, और फिर एक ब्लैंक पेपर दे दीजिए, लेट देम राइट ऑन इट। वो जो उन्हें समझ में आ रहा है कि मैंने क्या देखा, क्या किया, पहले उनका जो ऑब्जर्वेशन है वो उसको उस पर लिख दे, पेपर पर लिख दे। देन हम लोगों को फिर देखना चाहिए कि बच्चों के अपनी जो अवलोकन था, उनका जो ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने उसमें क्या लिखा है। फिर हमें उसमें फिर थ्योरी डालनी चाहिए, फिर उन्हें बताना चाहिए कि देखो जो तुमने देखा है वो ये चीज ऐसी थी।
तो इस तरह से फिर बच्चों का इंटरेस्ट भी जगता है और बच्चे जो है खुश भी रहते हैं, उन्हें लगता है कि हमारा टीचर जो है अथॉरिटेटिव नेचर का ना हो करके हमारा फैसिलिटेटर है, और फिर वो अच्छी तरह से पढ़ते हैं, क्लास में एंजॉय करते हैं। और गुरुशाला इस तरीके से जो ट्रेनिंग दे रहा है, ये भी बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को, और बच्चे आज खुश हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, दे आर वेरी हैप्पी। थैंक यू। थैंक यू सो मच अनुराधा मैम। सभी टीचर्स और सभी टीचर्स के जो बच्चे हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स को तैयार किया है, अपने क्लासरूम को ट्रांसफॉर्म करने की ओर एक स्टेप आगे बढ़ाया है, उन सभी को मेरा धन्यवाद। आगे हम चलेंगे और श्रवण सर से सुन लेंगे कि श्रवण सर क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। श्रवण सर, ओवर टू यू। यस सर। सर, you are not audible. जी, आपका माइक सर कनेक्टेड नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर श्रवण सर से दैट राइट। सर, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, बट हम बिल्कुल से हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं। अगर आप किसी और डिवाइस से ज्वाइन करना चाहें हमें, तो दैट विल बी रियली रियली हेल्पफुल, बिकॉज हम यहाँ आपको सुन नहीं पा रहे हैं। राइट। जब तक श्रवण सर आते हैं और हमारे साथ शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंस को, तब तक मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत एक गेस्ट को, स्पेशल गेस्ट को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी सभी से, जो कि है दीपा मैम। दीपा मैम के बारे में मैं थोड़ी बातें बताना चाहूँगी दैट दीपा मैम, today we would like to share our appreciation to you by recognizing you for your active and enthusiastic participation in our science program. It is also her dedication, passion and willingness to bring out a change that has enabled her to share these learnings, and she has shared these learnings to the other teachers as well. So ma'am, we would like to recognize you for it, and we welcome you on this auspicious occasion to speak a few words. Thank you, ma'am. Am I audible? Thank you. Yes, ma'am, you're perfectly audible. Yes. So, to all the teachers, I'm going to wish you a happy National Science Day. And first of all, I would like to congratulate Pratham Education Foundation as well as Gurushala for organizing such a meaningful program on such a beautiful day. Because most of the times what happens is on Science Day, we give a big lecture about C.V. Raman, and then we explain about the Raman effect, and we wind up the session. But today, we have brought those little C.V. Ramans on the stage. So that's really a great job by Gurushala as well as Pratham Education Foundation. So from UP, all the way from UP, Vidya and Shivani were there. We would like to see them as little scientists. We have seen them as little scientists today, and we would like to see them grow into big scientists in future. So once, somewhere when I read some paper, or somewhere after 10 years, maybe 20 years, when we see the paper, we would like to recognize these little kids as little scientists. Now as little scientists, and in future some article may appear, because that curiosity was there in those children, those little children. Maybe Sanju and Kiran, Roli and Anuj from all the way from Varanasi, and Anjali and Tarana from Dakshin Kannada. All these students, I'm really happy, because at this young age, they are already introduced not only to science, but also to technology. Because in the classroom, maybe in front of their friends, their students, they will definitely explain, they have their seminars, they have their hands-on sessions, experiments, all these things. But using technology, how to use online applications and how to present themselves, all these things today they have learned. Really, Pratham Foundation has done a very good job to educate these children in a unique and a different way. As already Anuradha madam, I guess, she just told, science should be learned on a hands-on session. So this is a very, very meaningful hands-on session, because
Here they are also learning science along with technology. And third thing I would like to tell is a special congratulations to all the teachers. They are no more than a scientist, because Anuradha madam, Rajeshwari madam, and Spurti madam, Shravan sir, they have done a beautiful job, because training the students, bringing them on the stage is not at all an easy job. You require a lot of patience, you require a lot of dedication. I know teachers these days are overstressed with overwork burden, but still I can see all those smiling faces on this beautiful science day. All the teachers, in spite of their heavy work, they are easily and happily training their children, putting efforts on their children, and that is reflected on those children, on those little children. I could see that confidence, I could see that involvement, I could see that curiosity in the children, and all the credits 100% goes to all the teachers. So big round of applause to all the teachers and their beautiful scientists. Absolutely, absolutely. And coming to the point, today, children, they have exhibited very simple experiments, but the deep within science and its topics is really amazing. And that has been explained very easily. So it may be 5th standard, 6th standard students, or maybe 8th standard students. So if we go into the classroom, use a chalk and a blackboard, it will be difficult for us to explain all these things. But kids with this simple experiments have explained it very easily. So sometimes what happens is, because of the pressure or because of that monotonous way of teaching, we forget this experimental method and we switch on to chalkboard and lecture type of method, thinking that is how people or students understand us. But the reality is, in science, students understand only if it is experimenting. And to add on to this, experimentation is not only in the laboratory. Experiment or learning should be everywhere, in the atmosphere, in the house, in the classroom, inside the friends peer group, everywhere they are experimenting. Try asking questions to them, simple questions. For example, today morning I just asked a student, he came to the prayer running, and then I said, why are you taking deep breaths? He said, I came to the prayer running. I said, why? Because you ran, you should breathe deeply. So he started looking like this. So what happened? A small thought has been generated inside him. So now he will start thinking, when we run, muscles need more oxygen, so we start breathing. There is a coordination between the muscles as well as the respiratory system. So like this, we need to ask very simple questions just to invoke it, or in what do we call, rekindle that science inside each children. Apart from experimenting, apart from teaching the textbook in a very nice way, let us all involve together and bring that science in our day-to-day life. Let us ask questions to the students regarding day-to-day life activities, so that science will be blended with the life in their life in future. So all these things, and at the end, I would like to really once again congratulate Gurushala, because this was a really new experience for the students and many of our teachers. And I'm very happy that I could meet all these teachers, all the talented teachers out there on the web. So all of them, we are happy that we had another family of teachers who can share our experiences in future. So one small advice to Gurushala is, you're training the teachers a very good job. Why don't you just, if possible, I don't know, if possible, just come inside each school, if possible, and train the students. So it will be really helpful, so that kids will enjoy and they will get a different type of education, and it will be really interesting for them. Somebody coming from all the way from some other state and then explaining science to them in their own classes would be really, yeah. Any response? Yes, thank you so much, Deepa ma'am, for that suggestion as well, and for those kind words. We will definitely look into it, and we will
we will look into all the aspects that we can provide to the teachers as well as students to take this program ahead, not just to take one scientific program ahead, but to inculcate that scientific thinking and curiosity, generate curiosity in the young students' minds. So yes, thank you so much, Deepa Thank ma'am, you. for sharing. Thank you for giving me Thank you. an opportunity here. Thank you. Thank you. Hello, Thank you. Lavoni. Yes, Dekhiye, yes, sir. Yes, Shravan yes, sir, you are perfectly audible now. yes. Okay. Thank you. A lot of thanks to Lavoni विश्वास मैम. सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया माने कि जितना भी थैंक्स बोलूँ ना कम. और माय लविंग इनोवेटिव साइंस टीचर, मैं आपको बता दूं कि मैं अपने स्कूल में नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आपसे जुड़ा हूँ. और दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द साइंस टेक्नोलॉजी. और मैं आज के दिन बहुत कुछ बोलूंगा, लेकिन पहले मैं अपने उस महान वैज्ञानिक के जो 28 फरवरी है ना, हम सभी इंडियन नेशनल साइंस डे मना रहे हैं. और मैं आपको बताऊं लावनी मैम कि इसके पहले मैंने एकदम नेशनल साइंस डे पे अपने कंपोजिट स्कूल दिल्ली विनायक सेवापुरी में बच्चों का पूरा मॉडल एग्जीबिशन लगवाया था, और उसमें मेरे यहाँ एनुअल फंक्शन भी हुआ था. तो इन द सोसाइटी, फ्रॉम द सोसाइटी, आवर बीओ, आवर एआरपी, सभी लोग आए थे. और बस मैं इतना कहूंगा कि एज ए साइंस टीचर मैंने अपनी लाइफ को डेडिकेटेड कर दिया है बेसिक एजुकेशन के लिए. मैं कितना बोलूं अपने बारे में, अनुराधा मैम जानती हैं. बस मैं इतना कहूंगा कि साथियों, चाहे इंडिया का कोई भी स्टेट हो, हम वी आर द साइंस टीचर. और विज्ञान की जननी होती है जिज्ञासा. मैंने विदाउट क्यूरियोसिटी नॉट ओरिजिन ऑफ द साइंस. जैसा कि आपने ए लॉट ऑफ थैंक्स दीपा उड़प्पा मैम, आपने एक सजेशन दिया गुरुशाला को कि टीचर को ट्रेंड करने की जरूरत नहीं है. प्लीज गुरुशाला की टीम आप भी कहिए, मैं तो 100% एक्सेप्ट कर रहा हूँ. हम टीचर ऑलरेडी एक्सपर्ट है मैम, हमें ट्रेंड मत करिए. हमारा टीचर सब एक्सपर्ट है. अगर आपको करना है ना, वी कम इन माई स्कूल, वी इंटरेक्ट टू आवर स्टूडेंट. और बहुत कुछ बोलना है, बस मैं इतना कहूंगा कि मेरे दोनों बच्चे रोली मधुर और अनुज ने चंद्रयान बनाया था. और मैं कल जाऊंगा स्कूल ना, इतने आएंगे ना कि श्रवण सर आपने मुझे मौका नहीं दिया, मेरे पास उत्तर नहीं है. तो आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे एस्ट्रो लैब में, एक एस्ट्रो लैब मिला है मेरे यहाँ मैम. और मेरे स्कूल से एक तमन्ना यादव थी, वो इसरो गई थी. और हमारे यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन मैम आई थी, और उन्होंने बच्चों से बात किया, और हमारे बनारस में कम से कम 10 एस्ट्रो लैब बनाया गया है. तो मैं तो मैम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारे विद्यालय को भी एस्ट्रो लैब दिया. और ए लॉट ऑफ गुरुशाला, मैं आपको इतना बोलूंगा कि आपकी जो टीम है ना, लाजवाब है. मैं आपके लिए पूरा सजेशन देना चाहता हूँ कि देखिए आपकी टीम, मैं पहली बार जब गुरुशाला की टीम से जुड़ा ट्रेनिंग में, तो एज ए स्टेट लेवल का आपके सामने आपका भाई है जो कि साइंस की ट्रेनिंग ही कराता है. मेरे नस में साइंस समाया है, और मैं अपने विद्यालय में साइंस लैब बनाया हूँ. आपकी गुरुशाला की टीम आकर के विजिट भी कर गई है. राबी लाबोनी मैम, आई इनवाइट टू यू कम इन माई स्कूल, वी इंटरेक्ट टू माई एवरी स्टूडेंट. तो एक बार मैं पुनः कहूंगा कि हमें ट्रेंड मत करिए प्लीज मैम, हमारे बच्चों को ट्रेंड करिए. और कुछ देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा साथियों आप सभी से, आपने मौका दिया मुझे. साइंस इज द नेम ऑफ द प्रैक्टिकल. विदाउट प्रैक्टिकल साइंस इज नथिंग. बट देखिए, हम उस लीग पे चलते रहे. मेरा तो ये मानना है ना कि जैसे मैम आपने कहा था ना कि क्यों, कैसे, क्या, जब तक हमारे जहन में कोई चीज बच्चा देखता है ना, जैसे सीवी रमन जब वो आसमान में तारों को देखा करते थे, तारे नहीं देखते तो क्या वो रमन इफेक्ट आता, क्या उनको नोबेल प्राइज मिलता क्या? तो ए लॉट ऑफ थैंक्स टू आवर ग्रेट फिजिसिस्ट माने कि व्हिच गॉट द नोबेल प्राइज. और हम सभी 1928 में उन्होंने पाया. और आज हम सभी लोग नेशनल साइंस डे मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता है, बहुत से विद्यालय मनाते हैं. लेकिन ए लॉट ऑफ थैंक्स टू गुरुशाला लावनी मैम, आपको भी, कि कम से कम आप हम सभी साइंस टीचर को इस स्ट्रीम यार्ड के माध्यम से, हमारे बच्चे, सोचिए कि मैं कितना मेहनत किया हूँ. अरे बस मैं
कुछ नहीं बोलूंगा, बस ये हो कि मैं आपके सामने हूँ। बस इतना कहूंगा कि साइंस के जो 11 स्टेप्स हैं, मैं आपको बताऊं मैम कि हमारे बच्चे सब लर्निंग आउटकम जानते हैं। येलो सी, देखिए आपने कहा ना कि आज के दिन हम सभी साइंस टीचर इंस्पायर हों, और आप गुरुशाला की टीम, आपने हम सभी को इंस्पायर किया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है। मैं आपको बताऊं कि विकास चौधरी जी, उनकी टीम हम लोगों के हमारे वीआरसी पे ट्रेनिंग कराई है, और आउटस्टैंडिंग ट्रेनिंग में मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है। अगस्त्या इंटरनेशनल फाउंडेशन इज आउटस्टैंडिंग प्लेटफॉर्म गिविंग टू आवर स्टूडेंट। लावनी मैम कहिए अपने गुरुशाला की टीम से, अगस्त्या इंटरनेशनल। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ बेसिक शिक्षा मंत्री आने वाले थे। हमारे बीओ ने, बीएसए ने कहा कि श्रवण सर आपके विद्यालय की विजिट। मेरे तो हाथ पांव फूल रहे थे कि मैं क्या दिखाऊंगा, साइंस लैब नहीं था। मैंने उनके सीईओ से बात किया, उन्होंने पूरी अपनी मोबाइल साइंस बैन ही भेज दी। सोच लीजिए, मैंने कि हमारे उसी हाल से शिक्षा मंत्री एएसपीटी विजिट करके जा चुके हैं। देखिए मैं कहना चाहूंगा गुरुशाला की टीम, हर के पास अपना एक सिस्टम होता है, लेकिन सबका लक्ष्य एक कि हम साइंस टीचर को आप ऐसी पीडागागी दे रहे हैं। तो आपके जो मैंने सीखा है, मैं आप सभी साथियों से शेयर करूंगा कि देखिए सबसे पहले की आउटस्टैंडिंग साइंस ट्रेनिंग बाय गुरुशाला टीम, क्योंकि जो मैं रियलाइज किया हूँ, क्योंकि जो कोई इंट्रो जो होता है ना, एक नया चीज इन्होंने दिया। मैं तो साइंस का टीचर एजुकेटर भी हूँ मैम, तो जो कुछ आपकी टीम ने दिया, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे अपने सेशन को लॉन्च करते हैं, यहाँ तक कि जो साइंस किट पे अभी हमारे यहाँ पिछली बार विकास चौधरी उनकी टीम ने, रोहिला मैम ने भी हम लोगों को ट्रेनिंग दिया था वीआरसी पे, जिसमें उन्होंने बताया था कि 13 सामान है मैम। अभी तो मैं 1-2 सामानों का यूज की हूँ, अभी तो मैं बाहर ही हूँ, और लेकिन यह है कि नेक्स्ट सेशन साइंस किट का पूरा एप्लीकेशन करूंगा। और लास्ट में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि साइंस इज द नेम ऑफ द नॉट प्रैक्टिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डूइंग, वी माने कि क्रिएट टू द एवरी साइंस फैक्ट इन आवर स्टूडेंट माइंड। माने हम तो कहते हैं कि सबसे पहले थ्योरेटिकल नॉलेज को, जो उसके सैद्धांतिक पक्ष हैं, उसको चाहे आप क्रिएटिविटी से करिए, चाहे खिला के करिए, चाहे जैसे करिए, ये तो हर साइंस टीचर की स्टाइल होती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं तो साइंस को कॉन्सेप्ट मैपिंग के तरीके से पढ़ाता हूँ मैम, और आप सभी के जितने आपने बोला है ना, मैंने सबके मैपिंग कर लिया हूँ। और मैम, मैं सबसे पहले मैम को बोलना चाहता हूँ, अरे क्या नाम था, स्फूर्ति मैम, आउटस्टैंडिंग स्पीच है आपका, बहुत बढ़िया बढ़िया अंग्रेजी बोली है, लेकिन थोड़ा हिंदी भी बोला। थैंक यू सो मच सर। आपने जो कहा, थैंक यू श्रवण सर, आपने जी नहीं, हमें बोल लेने दीजिए विश्वास में, अभी मैं कुछ बोला नहीं हूँ, मुझे बोल लेने दीजिए। देखिए मैं अपने स्कूल तो मुझे बोल लेने दीजिए, अपने 5 साथियों को मोटिवेट कर लेने दीजिए, ठीक है। तो साथ मैं ये कहना चाहूंगा, हम जानते हैं कि टाइम नहीं है, लेकिन मुझे सुन लीजिए, बेमन से ही सुन लीजिए, लेकिन सुन लीजिए साथियों। हम साइंस टीचर, मैं आपको एक रिसर्च बताता हूँ, रिसर्च का सर्वे बताता हूँ कि एट द ग्लोबल लेवल पे साइंस की क्यूरियोसिटी, साइंस टीचिंग, साइंस रीडिंग धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। तो साथियों, हम साइंस टीचर हैं, तो आइए मिलकर के इस नेशनल साइंस डे पर अपने बच्चों के अंदर, माने कि मैं आपको एक फार्मूला देता हूँ कि अगर ये 11 स्टेप हैं, तो साइंस निश्चित तौर पे बच्चे के अंदर जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जिप्र, परिप, निविब, अपुनि, नप्र। अब जैसे मैं आप ही से पूछूं स्फूर्ति मैम, जिप्र में जी का मतलब क्या है, जरा बता दीजिए तो। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, परफेक्टली ऑडिबल। जी सर, आवाज आ रही है। क्या आप फिर से बोल सकते हैं सर? बोल सकते हैं सर, रिपीट कर सकते हैं? बात कर रहा हूँ, फर्स्ट लेटर बात कर रहा हूँ। जिप्र में जी का मतलब क्या होगा, कोई भी साथी हमारा बता दे। जिप्र मैं बता देता हूँ। देखिए मैं तो हर बच्चा, सारा बच्चा जानता है, 315 बच्चे हैं हमारे 6-7-8 में, सारे बच्चे को मैं एकदम समझा दिया हूँ कि जी का मतलब जिज्ञासा, प्र का मतलब प्रश्न करना, परि का मतलब परिकल्पना, प का मतलब परीक्षण, निविब में निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, अपुन का मतलब अभिलेखीकरण, पुनर्विचार, निष्कर्ष निकालता, और लास्ट में है साथियों नप्र यानी नया प्रयोग। साइंस है तो वी टीचर मोटिवेटेड टू एवरी स्टूडेंट कि सबसे पहले हम क्यूरियोसिटी उत्पन्न करें,
अब एक क्यूरियोसिटी आपके किसी एक्टिविटी, जैसे मैं देखिए, मैं तो ये आप देख रही होंगी, दिस इज द चक्के पे चक्का। अभी हमारी बिटिया ने आपको फोटोसिंथेसिस का मॉडल दिखाया होगा, तो ये मैंने दिल्ली जाने के पहले मैंने इस चक्के पे चक्का पे मैंने बना दिया। काश मैं अपने बच्चों के बीच में होता मैम, तो आपको बहुत कुछ समझा देता। और मेरा तो विजन और मिशन है कि मैं साइंस को कॉन्सेप्ट मैपिंग के तरीके से पढ़ाता हूँ। मैंने साइंस ही नहीं, आप मुझे 500 पेज दे दीजिए, मैं 1 पेज में समेट दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले साइंस इज द नेम, मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। साइंस इज द नेम ऑफ द प्रैक्टिकल, विदाउट प्रैक्टिकल साइंस इज नथिंग। बट साथियों, थ्योरी भी जरूरी है। तो मेरा तो सिद्धांत है, हम प्रैक्टिकल बाद में कराएंगे, सबसे पहले मैं थ्योरी सिखाता हूँ बच्चों को। अगर वो थ्योरी जान लेगा ना, तो निश्चित तौर पे हम प्रैक्टिकल कभी भी करा लेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ, और थैंक यू लावनी विश्वास मैम, थैंक यू, और रहीला मैम और विकास चौधरी मैम, सभी हमसे दिल्ली में था, ट्रेन में था, मेट्रो में था, बात हो रही थी, स्कूल नहीं पहुंच पाया। और मेरे साथ मेरी वाइफ थी, वो कह रहे थे कि बतियावल हो, कितना बतियावल है, अरे हमारे साथ ही टहर ओवर ला कि तू खाली स्कूलिया का काम कर पे। लेकिन बस साथियों, स्फूर्ति मैम आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी है आपकी, और राजेश्वरी मैम आपके भी कमाल किया, अनुराधा मैम आप तो हमारे जनपद की ही है, आपके बच्चों भी a lot of thanks. You are also not science teacher, you are the scientist. तो बस इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, इस नेशनल साइंस डे पर आइए, एक संकल्प ले, गुरशाला टीम का थैंक्स बोले कि ये हमें नहीं, हमारे बच्चों को ट्रेन करिए। तो a lot of thanks. थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच रवन सर, हमारे साथ अपने व्यूज को शेयर करने के लिए। कंक्लूजन में मैं बस कुछ 2-4 लाइनें बताना चाहूंगी। that we advocate for a dynamic learning approach that goes beyond textbooks, allowing students to engage with concepts and unleash their creativity. A science classroom at Gurushala, we aim to be a place of exploration and curiosity and discovery, where students can develop practical knowledge and skills through hands-on activities. Thank you to all the teachers and the students for joining us today. Let me conclude today's session by quoting Dr. APJ Abdul Kalam, that science isn't just a subject, it is a way of living. Thank you again for joining today's session. Thank you very much. Thank you all. Thank you.